Question. Write short notes on the A. Peripetia, B. Sphota, C. Class ideology, D. Poetic diction. Answer. A. Peripetia. Peripetia is a term from classical Greek drama and narrative theory, referring to a sudden and often unexpected reversal of fortune or circumstances in a story. It is a key element in dramatic storytelling and can be found in various forms of literature, theatre, and film. Peripetia can drastically change the direction of the plot, leading to a shift in the protagonist's situation, usually from a position of success or hope to one of despair or failure, or vice versa. The concept of peripetia is closely related to the idea of dramatic irony, where the audience is aware of critical information that the characters in the story are not. This awareness can make the reversal even more compelling, as the audience witnesses the characters' reactions and decisions in light of their ignorance of what is about to happen. Peripetia is a fundamental element in many classic narratives, including Greek tragedies like Sophocles' Oedipus Rex, where Oedipus's discovery of his true identity and the consequences that follow exemplify a peripetia. In Shakespearean tragedies such as Macbeth, the titular character's descent into madness and ultimate downfall is another example of a peripetia. In contemporary literature and film, peripetia continues to play a crucial role in creating tension and engaging the audience. B. Sphota. Sphota is a concept from Indian linguistic and philosophical traditions, particularly within the context of Sanskrit grammar and the philosophy of language. It refers to the abstract, unarticulated sound or meaning that underlies and precedes the actual pronunciation or manifestation of a word. The term, Sphota, is derived from the Sanskrit root, sphut, meaning, to burst, or, to explode, signifying the idea that meaning suddenly bursts forth in the mind when a word is heard or read. The concept of Sphota is closely associated with the work of the ancient Indian grammarian Panini, who developed a comprehensive system of grammar for the Sanskrit language. According to Panini's theories, a word is composed of smaller phonetic units called phonemes or varnas. These phonemes combine to form a word, but the actual understanding of the word, its meaning, is the result of the Sphota. Sphota is considered the mental or intellectual aspect of language, and it is what allows us to comprehend the meaning of words and sentences. The idea of Sphota has also been discussed in the context of Indian philosophy, particularly by philosophers like Bhartrihari and Abhinavagupta. Bhartrihari, for instance, argued that Sphota is a transcendental reality and that it is a bridge between the inner mental world, mental Sphota, and the external world of language, auditory or written Sphota. In this view, Sphota is an essential concept that helps bridge the gap between thought and communication. The concept of Sphota has had a significant influence on the development of linguistic and philosophical thought in India. It raises questions about the relationship between language, thought, and reality, and it has been the subject of extensive debate and discussion among scholars and philosophers in the Indian tradition. C. Class ideology. Class ideology refers to a set of beliefs, values, and attitudes that are associated with and often serve the interests of a particular social class. These ideologies typically emerge from the economic and social positions of different classes within a society and can influence how individuals within those classes perceive their own interests and the interests of others. Class ideologies are often rooted in the economic structure of a society and the distribution of resources. In many societies, there are distinct social classes, such as the working class, the middle class, and the upper class, each with its own set of economic and social characteristics. Class ideologies can be used to justify and perpetuate the status quo, as well as to promote the interests of a specific class. For example, working class ideology may emphasize the importance of labor rights, fair wages, and workers' solidarity, as these issues directly impact the well-being of the working class. On the other hand, middle-class ideology may prioritize economic stability, individual achievement, and opportunities for upward mobility. Upper-class ideology can be centered on the preservation of wealth, social status, and maintaining the existing economic order. It's important to note that class ideologies are not monolithic, and there can be variations within each class. Additionally, individuals may hold beliefs that do not perfectly align with their class position, influenced by various factors such as education, personal experiences, and social awareness.
Class ideologies have been a central theme in the study of sociology and political science. Scholars have examined how these ideologies affect political behavior, social movements, and policy decisions. They also explore how class-based ideologies intersect with other forms of identity, such as race, gender, and ethnicity, to shape a person's worldview and political stance. D. Poetic diction. Poetic diction refers to the distinctive language and vocabulary that poets often use in their work to create a heightened, imaginative, and emotionally charged atmosphere. This specialized use of language differs from everyday or prose language and is intended to evoke specific feelings, images, and meanings in the reader or listener. Poetic diction encompasses several key elements, including figurative language. Poets often rely on various forms of figurative language, such as metaphors, similes, personification, and symbolism, to convey complex ideas and emotions in a condensed and evocative manner. These devices help the reader see and feel things in a new and vivid way. Imagery. Poets use vivid and sensory-rich imagery to create mental pictures and engage the reader's senses. Imagery allows readers to visualize and experience the emotions and scenes described in the poem. Rhythm and sound. Poetic diction pays special attention to the rhythm, meter, and sound of words and phrases. These elements can contribute to the musicality of a poem and influence its emotional impact. Techniques like rhyme, alliteration, and assonance are often used to enhance the auditory experience. Archaisms and elevated language. Poets may incorporate archaic or elevated language to create a sense of timelessness or formality in their work. This can give the poem a classical or timeless quality. Neologisms and wordplay. Some poets experiment with new words or employ wordplay to challenge linguistic boundaries and evoke fresh meanings. Neologisms are newly coined words, while wordplay can involve puns, double meanings, or linguistic innovation, allusion and intertextuality. Poets often reference or allude to other literary works, historical events, or cultural symbols to enrich the layers of meaning in their poems. These references can add depth and complexity to the text. Conciseness and precision. Poetic diction often requires the poet to be concise and precise in their choice of words. Every word carries weight and contributes to the overall impact of the poem. Emotional resonance. Poets aim to convey profound emotions and sentiments through their diction. The choice of words and the arrangement of language can elicit strong emotional responses from readers. Poetic diction varies among poets, styles, and time periods. While some poets adhere to traditional poetic forms and diction, others embrace experimentation and free verse, allowing for more flexibility in their use of language. The choice of diction is a critical aspect of a poet's craft, as it significantly influences the interpretation and impact of their work. सवाल। एक पेरिपेटिया बी स्फोटा सी वर्ग विचारधारा डी काव्यात्मक शब्दावली पर संक्षिप्त नोट्स लिखें। उत्तर। एक पेरिपेटिया। पेरिपेटिया शास्त्रीय ग्रीक नाटक और कथा सिद्धांत का एक शब्द है जो किसी कहानी में भाग्य या परिस्थितियों के अचानक और अक्सर अप्रत्याशित उलटफेर का जिक्र करता है। ये नाटकीय कहानी कहने का एक प्रमुख तत्व है और इसे साहित्य, थिएटर और फिल्म के विभिन्न रूपों में पाया जा सकता है। पेरिपेटिया कथानक की दिशा को काफी हद तक बदल सकता है, जिससे नायक की स्थिति में बदलाव हो सकता है, आमतौर पर सफलता या आशा की स्थिति से निराशा या असफलता की स्थिति में, या इसके विपरीत। पेरिपेटिया की अवधारणा नाटकीय विडंबना के विचार से निकटता से संबंधित है, जहां दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में पता होता है जो कहानी के पात्रों के पास नहीं है। ये जागरूकता उलटफेर को और भी अधिक सम्मोहक बना सकती है, क्योंकि दर्शक पात्रों की प्रतिक्रियाओं और निर्णयों को इस बात से अवगत कराते हैं कि क्या होने वाला है। पेरिपेटिया कई क्लासिक कथाओं में एक मौलिक तत्व है, जिसमें सोफोकल्स की ओडिपस रैक्स जैसी ग्रीक त्रासदियों भी शामिल हैं, जहां ओडिपस की अपनी असली पहचान की खोज और उसके बाद के परिणाम एक पेरिपेटिया का उदाहरण देते हैं। मैकबेथ जैसी शेक्सपियर की त्रासदियों में नामात्र के पात्र का पागलपन की ओर बढ़ना और अंतिम पतन एक पेरिपेटिया का एक और उदाहरण है। समकालीन साहित्य और फिल्म में पेरिपेटिया तनाव पैदा करने और दर्शकों को बांधे रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्फोटा।
स्फोट भारतीय भाषाएं और दार्शनिक परंपराओं की एक अवधारणा है, विशेष रूप से संस्कृत व्याकरण और भाषा के दर्शन के संदर्भ में। यह अमूर्त, अव्यक्त ध्वनि या अर्थ को संदर्भित करता है जो किसी शब्द के वास्तविक उच्चारण या अभिव्यक्ति का आधार और पूर्ववर्ती होता है। शब्द स्फोटा संस्कृत धातु स्फुट से लिया गया है, जिसका अर्थ है फटना या विस्फोट करना, जो इस विचार को दर्शाता है कि जब कोई शब्द सुना या पढ़ा जाता है तो उसका अर्थ अचानक दिमाग में फूट पड़ता है। स्फोटा की अवधारणा प्राचीन भारतीय व्याकरणविद पाणिनि के काम से निकटता से जुड़ी हुई है, जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण की एक व्यापक प्रणाली विकसित की थी। पाणिनि के सिद्धांतों के अनुसार एक शब्द छोटी ध्वन्यात्मक इकाइयों से बना होता है, जिन्हें स्वनिम या वर्ण कहा जाता है। ये स्वर मिलकर एक शब्द बनाते हैं, लेकिन शब्द की वास्तविक समझ, उसका अर्थ, स्फोटा का परिणाम है। स्फोटा को भाषा का मानसिक या बौद्धिक पहलू माना जाता है, और यह वह है जो हमें शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझने की अनुमति देता है। स्फोट के विचार की चर्चा भारतीय दर्शन के संदर्भ में भी की गई है, विशेषकर भर्तृहरि और अभिनवगुप्त जैसे दार्शनिकों द्वारा। उदाहरण के लिए, भर्तृहरि ने तर्क दिया कि स्फोट एक पारलौकिक वास्तविकता है और यह आंतरिक मानसिक दुनिया मानसिक स्फोटा और भाषा की बाहरी दुनिया श्रवण या लिखित स्फोटा के बीच एक पुल है। इस दृष्टि से स्फोटा एक आवश्यक अवधारणा है जो विचार और संचार के बीच की खाई को पाटने में मदद करती है। स्फोटा की अवधारणा का भारत में भाषाएं और दार्शनिक विचार के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। ये भाषा, विचार और वास्तविकता के बीच संबंधों पर सवाल उठाता है और यह भारतीय परंपरा में विद्वानों और दार्शनिकों के बीच व्यापक बहस और चर्चा का विषय रहा है। वर्ग विचारधारा। वर्ग विचारधारा विश्वासों, मूल्यों और दृष्टिकोणों के एक समूह को संदर्भित करती है जो एक विशेष सामाजिक वर्ग से जुड़े होते हैं और अक्सर उनके हितों की सेवा करते हैं। ये विचारधाराएं आमतौर पर एक समाज के भीतर विभिन्न वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से उभरती हैं और यह प्रभावित कर सकती हैं कि उन वर्गों के व्यक्ति अपने स्वयं के हितों और दूसरों के हितों को कैसे समझते हैं। वर्ग विचारधाराएं अक्सर किसी समाज की आर्थिक संरचना और संसाधनों के वितरण में निहित होती हैं। कई समाजों में अलग अलग सामाजिक वर्ग होते हैं, जैसे श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। प्रत्येक की अपनी आर्थिक और सामाजिक विशेषताएं होती हैं। वर्ग विचारधाराओं का उपयोग यथास्थिति को उचित ठहराने और बनाए रखने के साथ साथ एक विशिष्ट वर्ग के हितों को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, श्रमिक वर्ग की विचारधारा श्रम अधिकारों, उचित वेतन और श्रमिकों की एकजुटता के महत्व पर जोर दे सकती है, क्योंकि ये मुद्दे सीधे श्रमिक वर्ग की भलाई को प्रभावित करते हैं। दूसरी ओर, मध्यवर्गीय विचारधारा आर्थिक स्थिरता, व्यक्तिगत उपलब्धि और ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के अवसरों को प्राथमिकता दे सकती है। उच्च वर्ग की विचारधारा धन, सामाजिक स्थिति के संरक्षण और मौजूदा आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने पर केंद्रित हो सकती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्ग विचारधाराएं अखंड नहीं हैं और प्रत्येक वर्ग के भीतर भिन्नताएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा, व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक जागरूकता जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर व्यक्ति ऐसी मान्यताएं रख सकते हैं जो उनकी वर्ग स्थिति के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाती हैं। समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वर्ग विचारधारा एक केंद्रीय विषय रही है। विद्वानों ने जांच की है कि ये विचारधाराएं राजनीति को कैसे प्रभावित करती हैं। Question. Discuss briefly the ideas of Marx and Engels on class relations. Answer. Karl Marx and Friedrich Engels, two influential 19th century thinkers, developed a comprehensive theory of class relations that laid the foundation for much of modern sociology and political economy. Their ideas were primarily articulated in works such as The Communist Manifesto and Capital. In this discussion, we will explore the key concepts of Marx and Engels regarding class relations, elucidating their perspectives step by step. 1. Historical materialism. Marx and Engels began their analysis with historical materialism, a method that seeks to understand societal development through the lens of material conditions. They argued that the mode of production, the way society produces and reproduces its material life, shapes the social structure. Feudalism, capitalism, and socialism represent distinct historical stages defined by their economic structures. 2. Capitalism and bourgeoisie. In the capitalist mode of production, Marx and Engels identified two primary classes, the bourgeoisie and the proletariat. The bourgeoisie, or capitalist class, owns the means of production, factories, land, etc. They accumulate wealth through the exploitation of labor and the sale of commodities.
3. Proletariat and exploitation. The proletariat, or working class, lacks ownership of the means of production. Instead, they sell their labor power to the bourgeoisie in exchange for wages. Marx and Engels argued that the surplus value produced by the proletariat, value exceeding their wages, is the source of capitalist profit. This process of surplus extraction is the essence of exploitation. 4. Class struggle. According to Marx and Engels, the history of all societies is a history of class struggle. In the capitalist system, the primary contradiction is between the bourgeoisie and the proletariat. The struggle manifests in various forms, from everyday workplace conflicts to large-scale social upheavals. 5. Alienation. Marx highlighted the concept of alienation, describing how workers become estranged from the products of their labor, the labor process itself, their fellow workers, and even their own humanity. This alienation intensifies as capitalism advances, deepening the divide between the bourgeoisie and the proletariat. 6. Historical dynamics. Marx and Engels predicted that capitalism contained the seeds of its own destruction. The relentless pursuit of profit leads to technological advancements, concentration of wealth, and proletarianization. As the working class grows in size and consciousness, it will become a revolutionary force, overthrowing capitalism in favor of a classless, communist society. 7. Dictatorship of the proletariat. In the transitional phase between capitalism and communism, Marx proposed the dictatorship of the proletariat. This stage involves the working class using the state apparatus to suppress the bourgeoisie and reorganize society. Engels emphasized the need for this dictatorship to wither away once the conditions for communism are established. 8. Communist society. The ultimate goal for Marx and Engels was a classless, stateless society where the means of production are collectively owned. In communism, social relations are based on common ownership, and the principle, from each according to his ability, to each according to his needs, prevails. Conclusion. Marx and Engels' ideas on class relations offer a comprehensive analysis of the dynamics driving historical and social change. Their work has inspired generations of scholars, activists, and revolutionaries, shaping debates on inequality, exploitation, and the potential for a more just and equitable society. While the specifics of their predictions have been debated, the core concepts of class struggle, historical materialism, and the quest for a classless society continue to be influential in discussions on societal organization and change. प्रश्न: वर्ग संबंधों पर मार्क्स और एंगेल्स के विचारों की संक्षेप में चर्चा करें। उत्तर: 19वीं सदी के दो प्रभावशाली विचारकों, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने वर्ग संबंधों का एक व्यापक सिद्धांत विकसित किया, जिसने आधुनिक समाजशास्त्र और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की नींव रखी। उनके विचार मुख्य रूप से द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और कैपिटल जैसे कार्यों में व्यक्त किए गए थे। इस चर्चा में हम वर्ग संबंधों के संबंध में मार्क्स और एंगेल्स की प्रमुख अवधारणाओं का पता लगाएंगे, उनके दृष्टिकोण को चरण दर चरण स्पष्ट करेंगे। 1. ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स और एंगेल्स ने अपना विश्लेषण ऐतिहासिक भौतिकवाद से शुरू किया, एक ऐसी पद्धति जो भौतिक स्थितियों के लेंस के माध्यम से सामाजिक विकास को समझने की कोशिश करती है। उन्होंने तर्क दिया कि उत्पादन का तरीका, जिस तरह से समाज अपने भौतिक जीवन का उत्पादन और पुनरुत्पादन करता है, वह सामाजिक संरचना को आकार देता है। सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद उनकी आर्थिक संरचनाओं द्वारा परिभाषित विशिष्ट ऐतिहासिक चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2. पूंजीवाद और पूंजीपति वर्ग। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में मार्क्स और एंगेल्स ने दो प्राथमिक वर्गों की पहचान की, पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग या पूंजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों, कारखानों, भूमि आदि का मालिक है। वे श्रम के शोषण और वस्तुओं की बिक्री के माध्यम से धन संचय करते हैं। 3. सर्वहारा और शोषण। सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग के पास उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का अभाव है। इसके बजाय वे मजदूरी के बदले में अपनी श्रम शक्ति पूंजीपति वर्ग को बेचते हैं। मार्क्स और एंगेल्स ने तर्क दिया कि सर्वहारा वर्ग द्वारा उत्पादित अधिशेष मूल्य उनकी मजदूरी से अधिक मूल्य पूंजीवादी लाभ का स्रोत है। अधिशेष निष्कर्षण की यह प्रक्रिया शोषण का सार है। 4. वर्ग संघर्ष। मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। पूंजीवादी व्यवस्था में प्राथमिक अंतर्विरोध पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच है। संघर्ष विभिन्न रूपों में प्रकट होता है,
रोजमर्रा के कार्यस्थल संघर्षों से लेकर बड़े पैमाने पर सामाजिक उथल-पुथल तक। 5. अलगाव। मार्क्स ने अलगाव की अवधारणा पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे श्रमिक अपने श्रम के उत्पादों, श्रम प्रक्रिया, अपने साथी श्रमिकों और यहाँ तक कि अपनी मानवता से भी अलग हो जाते हैं। जैसे जैसे पूंजीवाद आगे बढ़ता है, यह अलगाव तीव्र होता जाता है, जिससे पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच विभाजन और गहरा हो जाता है। 6. ऐतिहासिक गतिशीलता। मार्क्स और एंगेल्स ने भविष्यवाणी की थी कि पूंजीवाद में अपने विनाश के बीज निहित हैं। लाभ की निरंतर खोज तकनीकी प्रगति, धन की एकाग्रता और सर्वहाराकरण की ओर ले जाती है। जैसे जैसे श्रमिक वर्ग का आकार और चेतना बढ़ती है, वह एक क्रांतिकारी शक्ति बन जाएगा, जो एक वर्गहीन, साम्यवादी समाज के पक्ष में पूंजीवाद को उखाड़ फेंकेगा। 7. सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच संक्रमणकालीन चरण में मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का प्रस्ताव रखा। इस चरण में पूंजीपति वर्ग को दबाने और समाज को पुनर्गठित करने के लिए राज्यतंत्र का उपयोग करने वाला श्रमिक वर्ग शामिल है। एंगेल्स ने साम्यवाद की स्थितियां स्थापित होने के बाद इस तानाशाही को खत्म करने की आवश्यकता पर बल दिया। 8. साम्यवादी समाज। मार्क्स और एंगेल्स का अंतिम लक्ष्य एक वर्गहीन, राज्यविहीन समाज था जहां उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व हो। साम्यवाद में सामाजिक संबंध सामान्य स्वामित्व पर आधारित होते हैं और प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार सिद्धांत प्रचलित होता है। निष्कर्ष। वर्ग संबंधों पर मार्क्स और एंगेल्स के विचार ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन लाने वाली गतिशीलता का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। उनके काम ने विद्वानों, कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है, जिससे असमानता, शोषण और एक अधिक न्यायसंगत और न्यायसंगत समाज की संभावना पर बहस को आकार दिया गया है। जबकि उनकी भविष्यवाणियों की विशिष्टताओं पर बहस हुई है, वर्ग संघर्ष, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्गहीन समाज की खोज की मूल अवधारणाएं सामाजिक संगठन और परिवर्तन पर चर्चा में प्रभावशाली बनी हुई हैं। Question. Comment on Mary Wollstonecraft's contributions to the rights of women. Answer. Comment on Mary Wollstonecraft's contributions to the rights of women. Mary Wollstonecraft, an 18th century philosopher and writer, made significant contributions to the rights of women through her groundbreaking work, A Vindication of the Rights of Women, 1792. In this step-by-step analysis, we will explore key aspects of Wollstonecraft's contributions to the feminist movement. 1. Background and context, 100 words. Mary Wollstonecraft was born in 1759, a time when women's rights were severely restricted. Her early life experiences, including a turbulent family life and financial struggles, influenced her views on the importance of education and equality for women. 2. Early influences, 150 words. Wollstonecraft's interactions with Enlightenment thinkers and her exposure to revolutionary ideas in France played a pivotal role in shaping her perspective. Influenced by thinkers like Rousseau and Voltaire, she critiqued prevailing societal norms that subjugated women, emphasizing the need for reason and education. 3. A Vindication of the Rights of Women, 200 words. Published in 1792, Wollstonecraft's seminal work challenged prevailing notions about women's intellectual and moral capabilities. She argued that women's lack of education was the primary cause of their subjugation and advocated for equal educational opportunities. Wollstonecraft dismantled the prevailing arguments that confined women to domestic roles, asserting that women were rational beings deserving of the same rights and opportunities as men. 4. Education and Empowerment, 150 words. Wollstonecraft passionately argued for women's education, advocating for a curriculum that focused on reason and critical thinking. She believed that educated women would be better mothers, wives, and citizens, contributing to the overall improvement of society. Her emphasis on women's intellectual development was a radical departure from the prevailing view that women should be educated solely for domestic purposes. 5. Marriage and Relationships, 150 words. Wollstonecraft critiqued the institution of marriage, which she viewed as oppressive for women. She argued for marriages based on mutual respect and intellectual companionship, rejecting the idea that women should be dependent on men. Her views on marriage were groundbreaking, challenging societal norms and advocating for relationships based on equality and shared values. 6. Legacy and Impact, 150 words. Wollstonecraft's ideas laid the groundwork for future feminist movements.
Her work inspired later generations of feminists to continue the fight for women's rights. While her ideas were controversial in her time, they became foundational to the evolving discourse on gender equality. Wollstonecraft's legacy endures as a symbol of early feminist thought, and her contributions continue to influence discussions on women's rights and equality. In conclusion, Mary Wollstonecraft's contributions to the rights of women were transformative. Through her eloquent and persuasive arguments in A Vindication of the Rights of Women, she challenged societal norms, advocating for women's education, equality in relationships, and an end to oppressive structures. Wollstonecraft's legacy remains wide. प्रश्न: महिलाओं के अधिकारों में मैरी वॉल्स्टोनेक्राफ्ट के योगदान पर टिप्पणी करें। उत्तर: महिलाओं के अधिकारों के लिए मैरी वॉल्स्टोनेक्राफ्ट के योगदान पर टिप्पणी 18वीं सदी की दार्शनिक और लेखिका मैरी वॉल्स्टोनेक्राफ्ट ने अपने अभूतपूर्व काम ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन 1792 के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस चरण दर चरण विश्लेषण में हम नारीवादी आंदोलन में वॉल्स्टोनेक्राफ्ट के योगदान के प्रमुख पहलुओं का पता लगाएंगे। 1. पृष्ठभूमि और संदर्भ। 100 शब्द। मैरी वॉल्स्टोनेक्राफ्ट का जन्म 1759 में हुआ था। वह समय था जब महिलाओं के अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध थे। अशांत पारिवारिक जीवन और वित्तीय संघर्ष सहित उनके प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने महिलाओं के लिए शिक्षा और समानता के महत्व पर उनके विचारों को प्रभावित किया। 2. प्रारंभिक प्रभाव। 150 शब्द। प्रबुद्ध विचारकों के साथ वॉल्स्टोनेक्राफ्ट की बातचीत और फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों के संपर्क ने उनके दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसो और वोल्टेयर जैसे विचारकों से प्रभावित होकर उन्होंने तर्क और शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए महिलाओं को अधीन करने वाले प्रचलित सामाजिक मानदंडों की आलोचना की। 3. महिला के अधिकारों की पुष्टि। 200 शब्द। 1792 में प्रकाशित वॉल्स्टोनेक्राफ्ट के मौलिक कार्य ने महिलाओं की बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं के बारे में प्रचलित धारणाओं को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं की शिक्षा की कमी उनकी पराधीनता का प्राथमिक कारण थी और उन्होंने समान शैक्षिक अवसरों की वकालत की। वॉल्स्टोनेक्राफ्ट ने उन प्रचलित तर्कों को ध्वस्त कर दिया जो महिलाओं को घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रखते थे, ये दावा करते हुए कि महिलाएं तर्कसंगत प्राणी थीं जो पुरुषों के समान अधिकारों और अवसरों की हकदार थीं। 4. शिक्षा और सशक्तिकरण। 150 शब्द। वॉल्स्टोनेक्राफ्ट ने महिलाओं की शिक्षा के लिए पूरे जोश से तर्क दिया, एक ऐसे पाठ्यक्रम की वकालत की जो तर्क और आलोचनात्मक सोच पर केंद्रित हो। उनका मानना था कि शिक्षित महिलाएं बेहतर माँ, पत्नी और नागरिक बनेंगी और समाज के समग्र सुधार में योगदान देंगी। महिलाओं के बौद्धिक विकास पर उनका जोर उस प्रचलित दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग था कि महिलाओं को केवल घरेलू उद्देश्यों के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए। 5. विवाह और रिश्ते। 150 शब्द। वॉल्स्टोनेक्राफ्ट ने विवाह संस्था की आलोचना की, जिसे वह महिलाओं के लिए दमनकारी मानती थी। उन्होंने इस विचार को खारिज करते हुए कि महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहना चाहिए, आपसी सम्मान और बौद्धिक साहचर्य पर आधारित विवाह का तर्क दिया। विवाह पर उनके विचार अभूतपूर्व, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाले और समानता और साझा मूल्यों पर आधारित रिश्तों की वकालत करने वाले थे। 6. विरासत और प्रभाव। 150 शब्द। वॉल्स्टोनेक्राफ्ट के विचारों ने भविष्य के नारीवादी आंदोलनों के लिए आधार तैयार किया। उनके काम ने नारीवादियों की बाद की पीढ़ियों को महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। जबकि उनके विचार उनके समय में विवादास्पद थे, वे लैंगिक समानता पर विकसित हो रहे प्रवचन के लिए मूलभूत बन गए। वॉल्स्टोनेक्राफ्ट की विरासत प्रारंभिक नारीवादी विचार के प्रतीक के रूप में कायम है, और उनका योगदान महिलाओं के अधिकारों और समानता पर चर्चा को प्रभावित करना जारी रखता है। निष्कर्षतः, महिलाओं के अधिकारों के लिए मैरी वॉल्स्टोनेक्राफ्ट का योगदान परिवर्तनकारी था। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन में अपने वाक्पटु और प्रेरक तर्कों के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, रिश्तों में समानता और दमनकारी संरचनाओं के अंत की वकालत करते हुए सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। वॉल्स्टोनेक्राफ्ट की विरासत लैंगिक समानता के लिए चल रहे संघर्ष में महत्वपूर्ण बनी हुई है, जिसने उन्हें नारीवादी विचार के इतिहास में एक अग्रणी व्यक्ति बना दिया है।